At the outset, let me thank WIRC Chairman CA Murtaja Bhai, Dynamic Secretary CA Sweta ji, and all the dynamic, energetic, active, proactive other team members, CA Piyush, Treasurer WIRC, CA Ankit, CA Gautam Lath, and distinguished members, ladies and gentlemen, good morning to all of you. Are we ready? Yes. Sure? Yes. So before I start, let me take guarantee and warranty from WIRC team. 1 घंटा मुझे पूरा मिलेगा. मिलेगा ना? वरना मजा नहीं आएगा. So I'm starting almost at 10:30. And rest assured, I'm not going to give you any kind of PowerPoint presentation. Time barring, पता नहीं चले आज है, कल रहेगा, नहीं रहेगा. You have picked up the right topic, time barring. The GST, we have seen the challenges. What is applicable today? And I always find, कई बंदे हैं जो GST, हिंदी इंग्लिश चलेगा ना? अच्छा, मारवाड़ी मराठी भी चलेगा. मराठी के लिए अगली बार. हाँ, मारवाड़ी थोड़ा हो सकता है. हिंदी चलेगा, राइट? नहीं चलेगा? अच्छा, चलेगा, चलेगा. नहीं चलेगा तो चला देंगे सर. हाँ हाँ. Oh, if you can, not an issue, this is okay with me. Yeah. They also told me there's one prize for the best participants. 2 prizes. 2 participants. Each session. And prizes किस बात के लिए? Interactive. अच्छा, जो मुझे टेंशन में डाले. कोई प्राइज नहीं है. ये बेकार का लोचा कर रखे हैं. Not an issue. Let me tell you one thing. When GST got started, we all thought GST is going to make our life easy, good and simple tax. But reality is reverse. Today, many professionals who want to come in GST, they always ask me one question, sir, कहाँ से स्टार्ट करूं? पहला क्वेश्चन. और दूसरा से स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, क्योंकि जो आज पढ़ रहा हूं वो शाम को एप्लीकेबल रहेगा नहीं रहेगा. So none is willing to, and they are taking their own time. But today, in 1 hour, I'm going to present 10 topics. Topic is too wide, but I will try to see if I can complete all the 10 topics under time barring under GST. As we all are doing GST, because GST become so much integral, whether you do statutory audit, bank audit, concurrent audit, internal audit, or income tax, assessment, anything, GST is there. Whether you are doing or not doing, your choice, but without GST, you can't do any professional work, let me tell you. We all are from Mumbai, and I'm coming from Delhi, and having presence in Mumbai also, believe me. Now, I need not require to have any office in Mumbai. Sitting in Delhi, I can serve to my client in Mumbai. My only point to all of you would be that this technical session and 2 days national conference, whatever going on, there are many things which can be taken by you for your best practices. When I'm talking about time barring, as we understand, जिसका time खत्म हो गया, लेकिन जिसका time खत्म हो गया उसको तो सुनना नहीं है. हमको सुनना किसको है? जिसका time है. And in this 10 topics, I'm going to discuss at length, including case studies, practical case studies, judgment, and everything. Let me start with the very first topic of the day.
time limit to avail credit, time barring. Very important for all of us, am I right? Time limit under section 16, subsection 4. And what is the time limit? Earliest of due date. Due date of furnishing 3B of September. This provision got changed to 30th November following the end of relevant financial year or date of furnishing annual return, whichever is earlier. So eventually, prior to 1st October 2022, it was due date furnishing 3B for the month of September, which is 20th October, which is now changed to 30th November. Having said that, I would like to have one case study with all of you, and I want to discuss this case study so that I should get the clarity. So October month, October 2022, you are going to file your GSTR 3B on 20th November, am I right? And I want really yes and no so that we can enjoy. अगर नहीं आता तो भी कोशिश कीजिए. क्या मालूम आज अगर आप गलत आंसर देंगे तो कल आपको समझ में आएगा. So October month GSTR 3B due by 20th November. Now please tell me, your supplier, let's say Bimal Jain from Delhi, he's supposed to file GSTR 1 by 11th of November pertaining to October. Am I right? But he does not file by 11th of November. He's filing on, let's say, 15th of November. So quite obvious, it will not be auto-populated in GSTR 2B. Am I right? It will not be. My first question goes to all of you. It is not coming in your GSTR 2B, but it is coming in GSTR 2A. Can you avail credit? Yes and no. How many of you say yes? And how many of you say no? Oh, so many no's are here. But there are another category like this. They are waiting for our answer. See, this 30th November looks like I was. Because for availing credit, there are conditions. Initially, we started with the 4 conditions. You should have tax invoice. You should have received goods and services. Your supplier must have paid taxes. You, as a buyer, regularly filing GST return. And 5th condition got introduced from 1st January 2022, that it must matches with GSTR 2B. There is no reference of 2A. So 14th of November, which is getting auto-populated, you are not finding this credit because GSTR 1 is being filed either on 12th or 13 or 14 or thereafter. But time limit is saying credit is available till 30th November. So time barring provision cannot be read in isolation. It has to be read in the context. But there are press releases. They say, Bimal, you will get credit till 30th November. So I may delay filing my 3B beyond 20th November does not help unless it is getting auto-populated in GSTR 2B. Am I clear to all? Any doubt to anyone? Those who say that it can be taken, that will be subjective and litigative. Point number 1. Point number 2. What is the reference of this section 16, subsection 4? To my mind, I'm giving you one example. And please listen very carefully. Section 16, subsection 4 is putting the time limit, earliest of due date, quite clear. But let's take an example so that you can understand. I'm from Delhi, supplying to Mumbai, charging IGST. And we have seen 17, 18, 18, 19, 19, 20. We haven't availed the credit within the time period prescribed for number of region, either or region. Now, what I'm going to ask you, and which is important for all of us together, and this I'm picking up from one of the example coming from the High Court, and 3 High Court.
In the case of Mahalakshmi Infra Contract Private Limited, Jharkhand High Court, supplier has filed his GSTR1 for the period, say, 18-19. It was B2B supply. Raised the invoice for B2B, but wrongly furnished as a B2C. This is the one example. Tell me, if I furnish as a B2C, will it going to be auto-populated in your GSTR 2A? No, clear? Instead of putting your GST number, I put GST number of some other party. It is going to be auto-populated. It was interstate supply, but wrongly furnished as an intra-state. Is it going to be auto-populated? Auto-populated, but ineligible. Am I right? I have filed my 3B, but did not file GSTR1. Maybe a case. I paid the taxes. Since I did not file GSTR1, it is not going to be auto-populated in GSTR 2A. Period is 18-19. Can you avail credit? I'm asking. And I did all mistake. B2B, shown as a B2C, wrongly GST number. Only in 2021, you came up to me and telling me, Bimal ji, it is not coming in 2A or 2B. इसमें तो आ ही नहीं रहा. मैं ये पैसा आपको नहीं दूंगा. Because it is not coming in 2A, नहीं दूंगा मैं आपको. आप GSTR1 amend करके आओ. आप GSTR1 amend करके आओ. 2021 pertaining to 18-19, can I amend that? Say yes and no? Not possible, right? For the region, section 37, which is pertaining to GSTR1, there's a time limit. I can rectify any omission or error in my GSTR1 by September of next financial year, following the end of relevant financial year. So 18-19, at most by September 2019. Am I right? Or date of furnishing annual return. I did not do that. Only in November 21, I then went to the officer, क्योंकि आपने मुझे पैसा नहीं दिया. मैं ऑफिसर के पास गया, मैंने बोला सर ये GSTR1 अमेंड करना है. And that officer is a good friend of mine. बोला बिमल कुछ नहीं हो सकता, तेरे को उधर में ही जाना पड़ेगा. एक बाबा हैं, GSTN बाबा, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, कुछ नहीं से. तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया, एक टिकट रेज कर दो. टिकट आपने टिकट रेज किया है ना? 24 घंटे में ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ? ऑटोमेटिकली रिजॉल्व. सो कुछ नहीं हुआ. My GSTR1 could not be amended. आपने पैसा भी रोक लिया. अब मुझे रिट फाइल करनी पड़ी. I went to झारखंड हाई कोर्ट. झारखंड हाई कोर्ट के पास गया and I said to Honorable Jharkhand High Court, Milord, this transaction is a revenue neutral transaction. Listen very carefully. You may have solution and this is the way you can solve it. So this is not only time barring, this is including time barring, but very interesting one. I did not amend within the time period prescribed. Can I do that? That is the only issue which I'm discussing with all of you. I went up to the Honorable Jharkhand High Court and pleaded, Milord, it's a revenue neutral transaction. Supplier has paid the taxes. Government has collected the taxes. Just because he made the mistake, B2B shown as a B2C, or wrongly furnishing of GST number, it's not coming in GSTR 2A. So you avail the credit and reverse the credit for the safety and security, and you have withhold my amount, tax amount, which is already paid to the government exchequer. It is being argued before Honorable Jharkhand High Court, Milord, it is revenue neutral transaction. आपको तो टैक्स का पैसा मिल ही गया है. आगे आप क्रेडिट नहीं देंगे, it will create cascading. And department was arguing, department was saying, सर ये ना नाटक कर रहा है इधर में. इसको टाइम दिया हुआ ना सितंबर तक का, इसने क्यों नहीं किया? तब फिर मैंने आर्ग्यू किया. मैंने कहा मिलॉर्ड,
there's one provision within the GST law which never got implemented. The relevant section 37, 38, 39, 42 and 43, a GST automated return system. It was envisaged. I said to the Lordship, Milord, supplier filing GSTR1 can make mistake. So it is not coming in my two-way. So you could have add, modify and delete, right? For filing GSTR2. And once you do add, modify and delete, it gets auto-populated for supplier and GSTR1A. बिमल तूने गलती कर दी है. तूने GST नंबर गलत नहीं डाला. गलत डाल दिया है. B2B करना था, B2C कर दिया है. मुझे 1A से मालूम पड़ेगा. मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा. तब GSTR3 फाइल करूंगा. मैंने मिलॉर्ड से बोला, मिलॉर्ड मेरी एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी. When law is saying there would be GST automated return system, मिलॉर्ड मेरे से गलती हो गई. टू एरर इज ह्यूमन. अगर एक 2A आ गया होता, पहले तो 2A आया ही जनवरी 2019 में, फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट वाज इम्प्रोवाइजिंग. अगर आपने GSTR 2 and 3 इंप्लीमेंट कर दिया होता तो आप करेक्शन करते और बिमल को मालूम पड़ गया होता. Am I right? और बिमल ने इसको करेक्ट कर लिया होता. मिलॉर्ड, सिंस आपने लॉ में प्रोविजन डाले हुए हैं 37, 38, 39, 42, 43 and you did not implement the same. So doctrine of impossibility. I could not do within the time period क्योंकि मुझे मालूम पड़ा ही नहीं. Lordship was convinced enough. Whether department can argue only on time barring? No way possible. No way possible. So Honorable Jharkhand High Court has given good judgment saying that I can amend my GSTR1 even beyond the statutory time period, time barring. The same judgment is being picked up by Calcutta High Court in TMC High Tech. This is a part of good story. But part of bad story, Telangana High Court, Yokohama India Private Limited. In that judgment, Telangana High Court is saying, Bimal, no way doable. Beyond the statutory date, if you are being allowed, then it may affect obligation and liabilities of other stakeholders. समझ में आ गया. तो उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिलाई किया, भारती एयरटेल. And what is Bharti Airtel? Listen very carefully. Then I will give you all flavors why this should be permitted. In Bharti Airtel, what happened? Bharti Airtel for the period July 17 to September 17, they have paid their GST liability through e-cash ledger and amount was 930 crore. Sir, छोटा मोटा amount नहीं था. 930 crore रुपए they have paid through e-cash ledger. In October 2018, when GSTR 2A first time came into the picture, they come to know they were having enough credit for that impugned period, July 17 to September 17. So they thought they could have paid through e-credit ledger, which they have paid wrongly through cash ledger. They have gone to Delhi High Court, Milord. Since department did not introduce GSTR 2A, we were not having any information that this much credit is available to me. I did not utilize my credit, but otherwise it was available to me for that impugned period. So I should be allowed to amend my GSTR 3B. Am I clear? And so this payment should go through e-credit ledger, and whatever I paid through e-cash ledger must be refunded back. Am I clear to all? Clear to all? जब तक आप नहीं बोलेंगे मजा नहीं आएगा. And there is a difference between Modi ji and Rahul Baba. जब तक आप बोलेंगे नहीं हाँ, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. Okay, and I really want this session should be the best session in this 2 days national conference. और ये तभी possible होगा सबका साथ. मैं बीजेपी से नहीं हूं. और भी कोई शिवसेना वाला यहाँ हो.
एनसीपी वाला यहाँ हो, यहाँ तो पता नहीं आए दिन किसी भी बात पे झगड़ा नहीं करना, बट आई वॉन्ट टू बी बेस्ट सजेशन ओनली विथ योर सपोर्ट. Delhi High Court has allowed GSTR 3B can be revised. Matter gone to Supreme Court, and Honorable Supreme Court is taking a call. Mr. Jain, you are wrong. You could have taken credit. Who stopped you? And why you are pleading for GSTR 2A? Why you are pleading for GSTR 2A? It was only facilitation. It was only facilitation. Now, if we allow revision of GSTR 3B now, definitely going to affect obligation and liabilities among other stakeholders, central government and कितना दर्द है उनको, उनकी liabilities affect हो जाएगी. My answer to all of you now, when the Honorable Supreme Court is saying GSTR 2A is only facilitation, and we all know for sure my credit is not dependent, I'm repeating again, not dependent on GSTR 2A. But from 1st January 2022, my credit is dependent on GSTR 2B. Am I clear? So when it is not dependent on 2A, irrespective of fact, अगर आप मुझे amend करने के लिए दे भी देंगे और नहीं भी देंगे, तो भी आपको credit मिलेगी, 100% मिलेगी. So I pleaded on two grounds. Millot, doctrine of impossibility, which you did not introduce. Government did not introduce. And 2A only facilitation, Millot. Bharti Airtel. But Telangana High Court picking up this Supreme Court judgment, and it will affect obligation and liabilities of other stakeholder, is not on a right footing. So my summary, in my humble opinion, until 31st December 2021, am I right? My credit can't be denied, even though it is not coming in 2A. Can we? I'm coming back, don't worry. So he becoming the first participant to get that award. No, he has heard very clearly that he will get the award. Now he's talking about something, Rule 36 sub Rule 4. Sir, GST में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है? बेटा आ गया, बाप की शादी नहीं हुई है. लिव इन पार्टनरशिप, वो नए नए टर्म आ गए हैं सर, जीएसटी में भी आ गए. What is Rule 36 sub Rule 4? That my credit, your credit would be capped. 20%, then 10%, then 5%. Pertaining to ineligible credit, right? Which is not coming near 2A, but calculated on 2A credit basis. Do you all know, right? What is the essence of that Rule 36 sub Rule 4 when 2A per se, Supreme Court saying it is only a facilitation? सर फिर रूल 36(4) का मतलब रह कहाँ गया? That was period from 10th of October 2019 to 31st December 2021. रूल था ना सर, पर प्रायर टू 31st December 2021 ही हुआ ना. तो मैं तो कह रहा हूं 2A का कोई लेना देना है ही नहीं. तो आप ये क्या जुलाई 17 to September 17, आप पक्का डिपार्टमेंट से उफ, ये तो ऐसे ही देख रहे हैं, ये तो जुलाई 17 to September 17. अरे मैं बोला टिल 31st December 2021 2A का कोई रिलेवेंस, तो फिर 36(4) स्टैंड कहां किया? होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एम आई क्लियर? So please fight it out. In case you are having such case, please fight it out. And you will get really relief. That is my commitment. And way forward, हम देखेंगे 4-5 साल में. So this was on 16(4). Another part of 16(4), let me resolve that one as well. RCM liability. RCM from registered supplier and RCM from unregistered supplier. Am I right? एक बार के लिए मान लेते हैं 16(4) स्टैंड करता है, मान लेते हैं एक बार के लिए. पर एक इंटरप्रिटेशन आपको बताता हूं सर. इंटरप्रिटेशन ध्यान से सुनिएगा. By the way, can I really check how many of you are doing GST practice? Sorry, I'm asking. Okay, all of you are doing that.
Have you read section 16 subsection 2? It starts with a non-obstante clause, notwithstanding anything contained in the section. No registered person shall be entitled to avail credit unless satisfy these conditions. What? You should have tax invoice copy, you must have received goods and services, your supplier must have paid taxes, you are regularly filing GST return. My interpretation is when it is starting with a non-obstante clause, then it is overriding section 16 subsection 4. Are you all listening to me? So for me 16(4) का कोई लेना देना नहीं है. But it is yet to be tested. Notice is being issued to the revenue, writ is being filed in different high court only on this ground. Now coming to the RCM, registered supplier versus unregistered supplier. Let's say there's certain transaction RCM applicable. You taken from registered supplier, you taken from unregistered supplier. For unregistered supplier, let's say I'm an advocate, I'm raising my invoice on 1st of January 2019, 10 lakh rupees. You need to pay under RCM. You did not pay till 17th of December 2022. आज आपको लगा यार RCM में देना था मेरे को, मैं दे नहीं पाया. Liability was 18-19, right? Let me ask first question. My invoice was 1st January 2019. By when you were supposed to pay RCM liability? Please tell me, by when? Active member? सर कब तक देना था? 20th February तक देना था. 20th February. Do you all agree with him? No. Time of supply provision. Date of payment which you haven't given. Then date following the end of 60 days from the date of invoice. So 1st March 2019 become POT, time of supply. So उस दिन से देना था आपको और आज तक आपने आप सब पूरा पैन इंडिया सब यही पूछते हैं सर अब आरसीएम तो देना है ना. पहले पूछते देना है ना, देना है नहीं देना, देना है. दूसरा क्वेश्चन पूछते सर क्रेडिट मिल जाएगा 18-19 का, मिल जाएगा हाँ या ना. हाउ मेनी ऑफ यू से यस एंड हाउ मेनी ऑफ यू से नो? बीच वाला नहीं डर इस पार्टी से बड़ा डर लगता है. आइदर यू शुड बी ऑन बीजेपी और कांग्रेस नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकता, वो हमको मालूम है कितना आप है. But nevertheless, you have to be either on site. To my mind, if it is from unregistered supplier, credit is available. Credit is available. And I'm giving you food for thought. Section 16, subsection 4, time limit बोलता है ना. 18-19 का तो गया टाइम. फिर बिमल जी कैसे बोल रहे हैं इस बात को? I'm telling you. In case of RCM from unregistered supplier, you will raise self-invoice to yourself. Under section 31, subsection 3, clause F of CGST Act. And that is the eligible credit document. But rule 36B says, Bimal, credit तुझे तभी मिलेगा when you pay the liability. So credit document is self-invoice, which you have to raise. आपने तब तो रेज किया नहीं. आज की डेट में मैं आपसे रेज कराऊंगा, 17 दिसंबर 2022 में रेज कराऊंगा. तो मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा रिलेवेंट हुआ, 18-19 या 22-23? 22-23. I made mistake, procedural non-compliances. मुझे 18-19 में रेज करना था, रेज कर रहा हूं 22-23 में, only general penalty 50,000 rupees, 25. बट मुझे क्रेडिट तो ये 18-19 के 9(9)(c) में दिखाने का है सर, दिखाने का. यस नो, इट इज टू बी सोन इन 3B ऑफ दिसंबर. ऊपर में लायबिलिटी ऐड कीजिए, नीचे क्रेडिट लीजिए. Am I clear to all? But RCM to be paid in cash along with interest. And what is the rate of interest? 18%. 18%. दोनों कैश में देना है और इंटरेस्ट इज ए लॉस, बट क्रेडिट आपको मिलेगा. Had it been registered supplier subject to RCM, सेम फॉर्मूला लगा दें.
उसने इनवॉइस रेज कर दिया है 1 जनवरी 2019 को, अपने GSTR 1 में डाल दिया है, वहां टिक कर दिया है सब्जेक्ट टू RCM, then this date of invoice become relevant for section 16 subsection 4. यानी आपको registered supplier subject to RCM credit. Am I clear to all? Hope this part is beautifully conveyed to all of you. Pakka? Perfect. Come to the next topic. And next topic is again very, very interesting one. Time to raise credit note and debit note in GST. Time barring. Any time limit for raising credit note? Say yes and no. There is time limit. Section 34. And section 34 subsection 2 says Bimal earliest up to date. By September of next financial year, following the end of financial year. Or date of furnishing annual return, whichever is earlier. Credit note under GST. Am I right? एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ, आज जितनी भी टॉपिक मैं करूं ना आपके सामने, आप जब घर जाएं तो आप बोले यार एकदम परफेक्ट, विदाउट पीपीटी समझ में आ गया. एंड व्हेन यू से टू योर ओन फ्रेंड्स कि विदाउट पीपीटी समझ में आ गया, तो पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा जीएसटी समझ के आया है ना. But don't worry about. I'm trying my best. You have to just help me out to get me a best session of this 2 days national conference. करेंगे ना help मेरी? करेंगे ना? हाँ, मुझे देखिए, see, I'm putting my whole energy and 1 घंटे तक मैं आपको जो mesmerize करना चाहता हूँ ना, you should feel like यार पिक्चर क्या होती है. आपने YouTube पे ही देखा है अभी तक. आपने मुझे YouTube पे ही देखा है. लाइव देख रहे हैं तो लाइव का मजा अलग आना चाहिए, राइट? टेक दिस टॉपिक, क्रेडिट नोट अंडर GST. टाइम लिमिट है सितंबर, which is now changed to 30th November. So I'm a supplier, 100 rupees I've supplied and I charge GST 18%. If at all I want to issue credit note under GST, let's say for 10%, post supply, I need to issue a credit note, am I right? So 10%, 10 rupees, again 18% applied, 1.80 credit note. Am I right? So there's the provision under section 15, subsection 3, clause B of CGST Act. कैसे करने का देख लीजिए. बिमल क्या करेगा? बिमल इस क्रेडिट नोट को अपने GSTR 1 में चढ़ाएगा. ₹1.80 on 10 rupees. I will be allowed to adjust this 1.80 with my other output liabilities because I'm issuing a credit note. Am I clear? And you as a recipient going to reverse credit, excuse me, ma'am, please. Please put your mobile on flight mode. Not an issue, ma'am. So you need to reverse credit to the extent of 1.80. This is what we have to follow. आपका ट्रांजैक्शन आपका 3B में ही जाता है, किसी को नहीं मालूम आपने किया भी या नहीं किया. बहुतों ने नहीं किया होगा. आपने 99C भी भरवा दिया होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट पे भी साइन कर दिया होगा. किसी ने नहीं देखा होगा कि आपने रिवर्स किया या नहीं किया. बट सप्लायर इज सपोज्ड टू मेंशन इन टेबल 9 ऑफ GSTR 1 to get adjustment of 1.80 time limit. Now please tell me, and this is the question to all of you, instead of this credit note under GST where one of the condition is you should reverse the credit, मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? There is no mechanism available to me. I'm dependent on you only. आपने किया या नहीं किया? कल मैंने अगर 1.80 का एडजस्टमेंट ले लिया और आपने रिवर्स नहीं किया, डिपार्टमेंट आके मुझे पकड़ेगा. And there is no mechanism to check. But अगर ऑटोमेटेड GST रिटर्न सिस्टम अगर इनने इंप्लीमेंट किया होता ना, तो सब चेक होता. इनने आधा अधूरा, शादी तो कराई नहीं हम लोगों की. ये हंसने में अच्छा लगा, but that is what the irony of GST today. They introduced when system was not ready. They introduced when the law was a little evolving stage, and सब कुछ by way of rule. बेटे बच्चे को बाप ने पावर नहीं दिया, बच्चा एक्ट कर रहा है. रूल 36 सब रूल 4. हाँ, there are so many provision. I can tell you. 3B was what? 3B was not a return.
GST 3 was the return under section 39. By way of rule, retrospective rule आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, बोल दिया यही तेरा बेटा है. सर जीएसटी में यही रोना है जीएसटी में. Let me come to the point. So I can't check whether you reverse the credit or not. How I'm going to comply with? Challenge number 1. Challenge number 2. Only GST credit note? Can't I issue financial credit note without GST? Please tell me. Can I do that? Possible. तो फाइनेंशियल 10 रुपए का रेज करूंगा, कोई जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, राइट? कर सकते हैं, बराबर है. आपको रिवर्सल करना है कुछ? हाँ या ना? नहीं करना. बेटर ऑप्शन and with no time limit. With no time limit, it is out of GST. But एक प्रॉब्लम अब आपको दे दूं. 100 रुपए का मैंने इनवॉइस रेज किया था ना, और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट 10 रुपए का दिया, तो आपने मुझे कितना पे किया? 90. 10 रुपए आपने. There's one proviso under section 16 subsection 2 Bimal, recipient fails to pay within 180 days, then you need to reverse credit along with. तो ये 10 रुपया जो आपने मुझे नहीं दिया because of financial credit note, will it not be termed as you fails to pay which you were supposed to pay within 180 days? Hence you need to reverse credit along with interest. Hope all you got it. पहले आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है. अब आप बताइए अब क्या करेंगे आप? Still no reversal? Still no reversal? Oh, but okay. Perfect. So he is another contender for the best participant, interactive participants. Let me tell you. Since we have picked up this issue, listen very carefully. This proviso under section 16 subsection 2 say recipient fails to pay. Please. What is the meaning of fails to pay? There was agreed term and you did not follow that. That is fails to pay. But when we have said that you will pay only 90, where is fails to pay? But let me do this analysis. इसको भी मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से कर लूँ आपके सामने. I'm parking this one. फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मैंने पार्क किया. अभी मैंने आपको जजमेंट नहीं दिया है कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के केस में वो आपसे रिवर्सल मांगेगा या नहीं मांगेगा. दिस जजमेंट इज ऑन होल्ड, ऑर्डर रिजर्व्ड. लिसन दिस पार्ट. I have raised the invoice for 10 lakh. You did not pay within 180 days. I happened to meet with one of the minister. I'm not naming for the, we are on public domain. Has spoken to the minister of group of minister and I've told them, sir, आपने GST में ना, you said good and simple tax. We welcome Rajkumar ji. He is with us today. I spoke to minister and I represented chartered accountant issue. Let me tell you very interestingly, listen very carefully. मैंने कहा सर GST में ना आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है. बोले क्या? सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. एक तो सबसे पहले आपने 20 लाख से ऊपर जो रजिस्ट्रेशन वाला जो क्राइटेरिया है, पहले 50 लाख तक का लिमिट होती थी, कैश में पे करना है, बहुत कुछ एडवांटेज थे हम लोगों को. आपने सर सब धज्जियाँ उड़ा दी हैं. तो उन्होंने बोला बिमल को समझ में नहीं आया, ठीक से समझाओ. मैंने कहा सर मैं अपने क्लाइंट को 10 लाख की इनवॉइस रेज करता हूं, जीएसटी चार्ज करता हूं. आप कहते हैं बिमल इस जीएसटी को जमा कराओ ऑन एक्रूअल बेसिस. है मैं राइट? देयर इज नो कैश पेमेंट कि मुझे आपसे मिलेगा तब मैं जमा कराऊंगा, राइट? और नहीं जमा कराया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%. उन्होंने कहा बिमल तेरे को मालूम नहीं ना 180 डेज का प्रोविजन है तेरे लिए, वो तुझे देगा ना, नहीं देगा तो इसे रिवर्सल मारना पड़ेगा. मैंने कहा सर क्रेडिट लेने के लिए वो मुझे पे करेगा. सर हमारे तो ऑडिट की फीस ही अगले साल आती है. ऑडिट की फीस ही क्या उनको नहीं मालूम है 180 डेज? और कई बार डीमोनेटाइजेशन आपको मालूम है ना, उस टाइम पे सबने चल चल के पैसे दिए, ले तेरी फीस बाकी है लेके जा. पूरा पैन इंडिया ने चल के दिया है.
अदरवाइज नॉर्मल प्रैक्टिस इज नेक्स्ट ईयर, एम आई राइट? सर मैंने कहा ये आप गलत कह रहे हैं सर। मैंने कहा सर एक ही ट्रांजेक्शन पे आप 2 बार टैक्स ले रहे हैं। उन्होंने पूछा बिमल कैसे? मैंने कहा सर 10 लाख का जब मैंने इनवॉइस रेज किया, आपने एक्रूअल बेसिस पे मुझसे जमा करा लिया। अब 180 डेज में आपने नहीं दिया तो आपसे भी जमा करवा लिया रिवर्सल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। सर आपने एक ट्रांजेक्शन पे 2 बार टैक्स नहीं ले लिया मेरे से। इट इज नॉट अनजस्ट इनरिचमेंट। अगर आप इनसे रिवर्सल मांगते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मांगते हैं, तो जब ये पे करे तो क्रेडिट भी दीजिए और इंटरेस्ट भी वापस कीजिए। एम आई नॉट राइट? सर कुछ नहीं होता। आई वॉज ऑन ए रेसिपिएंट फेल्स टू पे, लेट मी डू सम एनालिसिस। If it is RCM liability, will this recipient fails to pay within 180 days going to be applicable? Yes and no? No. Few voice. Yes and no? No, because you are recipient who will pay. If it is Schedule 1 transaction, distinct person, related person, without consideration, whether this recipient fails to pay applicable? Because it is without consideration transaction. Third, AR/AP knockoff. 10 लाख का मैंने बिल रेज किया, 5 लाख का आपने रेज किया, to the extent of 5 lakh it's paid. Do you agree? Paid. And last one, a very interesting one, listen very carefully. There are certain FOC supplies by recipient to the supplier. And in such cases, if it is obligation of, example लेना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। Example लेता हूँ। I'm a contractor. I'm undertaking construction of this building for you. You're a Reliance Industries Limited. I'm undertaking construction of this building which is worth 100 crore rupees. उससे नीचे तो करना ही नहीं चाहिए। Reliance Industries से नीचे करूँगा तो फिर बेकार। 100 crore rupees. But what you did as a Reliance, you have purchased cement and iron steel from the market. And you provided to me free of cost to be used in this contract. Why you purchased from the market? Because you were not having a Reliance कि बिमल भी proper cement iron steel use करेगा या नहीं करेगा। Contract कितना का था? पहले मेरा ही liability थी cement iron steel. Am I right? अब जब मैं invoice आपको raise करूँगा, I'm supposed to get only 50 crore. But when I'm raising my invoice, do I need to charge GST on 50 crore or 100 crore? 100 crore? Even though you paid 50 crore to me. पक्का? Lock कर दें? Perfect. It was written agreement, obligation of supplier. That's the reason section 15, subsection 2, clause B says, I need to include in my valuation for GST chargeability, 100 crore. Am I right? Am I right? Let me solve this query as a whole. Reliance purchased cement and steel, GST charge on them. Will they get credit? Yes and no. How many of you say credit available? Yes. And how many of you say credit not available? अच्छा, बीच वाले अभी भी हैं। अच्छा, जो 2 बेस्ट पार्टिसिपेंट है ना, वो बीच वालों में से, जो एकदम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। सर ऑन ए लाइटर नोट, बट आई रियली वांट समटाइम, बाबा रामदेव सेज के हाथ पांव उठाते रहिए, पांव मत उठाइए, हाथ उठाइए, कम से कम ये तो लगे चल रहा है, वरना बगल वाला पूछेगा ठीक है सब ठीक। सर मैं एक चीज बताऊं आपको, इन आवर प्रोफेशन कई बार तो यही लगता है इस प्रोफेशन में आई क्यों। वो सीए का मुझे दिन याद है, जिस दिन फाइनल का लास्ट पेपर था, सोच के आया था अब ऊपर रख दूंगा, उठाऊंगा ही नहीं, इस बुक को ऊपर रख देंगे, उठाएंगे नहीं। क्या मालूम था कि लास्ट मिनट तक इसको उठाएंगे नहीं तो हम नहीं उठेंगे। इस सीए का प्रोफेशन, बट ठीक है सर। तो कभी कभी पढ़ाई ना पीपीटी मोड पे नहीं करनी चाहिए, नींद आने लगती है, लाइटर नोट पे करनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार थोड़ा लाइट डालने की कोशिश कर रहा हूं, और पिक्चर वही चलती है जो मसाला है। Am I right? चलिए फिर वापस पॉइंट, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा।
Section 17, subsection 5, clause D. नहीं मिलेगा. Even though you are going to use this premises for taxable supplies. नहीं मिलेगा. Now second, you have given me this 50 crore cement and iron steel to me, to supplier. Supplier again will include 50 crore, along with 50 crore, 100 crore, which we have said. 100 crore would be the value for chargeability of GST, and I'm going to charge GST on 100 crore. आपको credit मिलेगा? 17.5C नहीं मिलेगा. 17.5C नहीं मिलेगा. Works contract services नहीं मिलेगा. So tax planning for all of you. In all such contract where you are giving FOC supplies, kindly delink the contract. Had it been only 50 crore of Bimal Jain and 50 crore you are supplying FOC to me separately, then this 50 crore FOC should not be included. Then it is not my obligation. Am I clear to all? So एक ही example में बहुत सारे tax planning. Am I clear? So I was on a point of recipient fails to pay. Now in this given example, 50 crore FOC supplies you made to me with a reversal required on this extent, to the extent of 50 crore, which is FOC supplies. Because you need not require to pay to me. Am I clear? So this was another part of it. Now let me take to another aspect, and then one is called force majeure clause. I really appreciate the gentleman on the back. He invited my attention. What is the definition of recipient fails to pay? In force majeure clause, there is always condition. COVID आया था ना, सबके terms थे, पर सब बंद था, नहीं पे कर पाए. But then the contract is saying because of beyond normal situation, अगर ऐसा कुछ होगा, आप fail करते हैं, so that is not recipient fails to pay. It is beyond our control. Am I right? But let's listen very carefully. There was a contract, no force majeure clause in that contract, including you who cited recipient fails to pay. 36.4. In that contract, during COVID-19, we came together. हमने बोला यार market बंद है, business चल नहीं रहा. Okay, I'm giving extended time period, extended credit term, right? So let's say on cutoff date 17 December 2022, let's assume 180 days passing by. As per provision, you need to reverse credit along with interest. But we come together, negotiate a new date, and then I agree that you should take more 6 months to pay me the money. Can it fall under recipient fails to pay? It will not. Because recipient fails to pay will arise only when agreed term and you're not following the same. Sometime AMC done 1 year, credit term is 1 year. Invoice rates with the credit term 1 year. It is fails to pay. We agreed for credit term. It is not fails to pay. Hope I'm clear to all of you. My judgment on financial credit note, no reversal required. No reversal required. But in that financial credit note, are you going to are you going to show this transaction in your GSTR return? Yes and no. No way, it is out of GST. No adjustment, that the supplier will not do any output tax adjustment, and you need not require to reverse credit. Hope clear? Pakka? Perfect. Come to the next point. And this is your test now. Now, अब तक आप लोग मेरा टेस्ट ले रहे थे. एक टेस्ट मुझे आपका लेना है. I raised one invoice on 1st January 2019 under forward charge 10 lakh rupees. Charge GST. There was a price escalation clause in the contract. So I'm supposed to raise my price by 20%. For which I'm raising debit note today, 17 December 2022, which is pertaining to my original invoice dated 1st January 2019 of 1819. Am I clear? Time limit provision of section 16, subsection 4, going to be applicable for this debit note which is dated today but pertaining to original invoice of
1st January 2019? Say yes and no. No, because it is being delinked from 1st January 2021. Am I clear to all of you? Perfect. Okay. Come to the next time barring provision, and very interesting one. And this we must understand also. One section is section 50, subsection 1, for interest, delayed payment of GST. Am I right? And to that Honorable Minister, I said, sir, you are talking about SME and MSME. You charge a rate of interest is 18%, right? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे पैसा ही अगले साल मिलना है. आप कहते हैं बिमल तू घर से लेके आ, घर से लाके जीएसटी जमा कर. अगर जीएसटी जमा नहीं किया तो 18%, नहीं तो बैंक जा 12% पे लोन ले और जीएसटी जमा कर. ये कौन सा ईज ऑफ बिजनेस है सर? एंड 18% सच ए हाई रेट. सर आप भी तो डिले करते हैं रिफंड देने में. अच्छा हम डिले भी करते हैं, उनको मालूम नहीं है. मैंने कहा सर प्रिंसिपल ही आ जाए, ब्याज तो हम तब मांगते हैं जब प्रिंसिपल वापस आ जाता है, वरना ब्याज तो पहले मांगते ही नहीं है हम लोग. और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मालूम है? 6%. 6%. पहले आ ही जाए. Why disparity? So lot of things which we have demand from the government, but we are not getting it, right? And problem and challenge for us. Come to section 50, subsection 1. Very interesting one. And you need to really understand this provision in a very crystal clear term, because there are time barring provision, some stuff, related stuff. My January 2022 return I delayed. January 2022 का रिटर्न मुझसे लेट हो गया. लेट हो नहीं गया. प्रॉब्लम इज दैट मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं था. और विश्वास मानिए लेट होता उसी वजह से कि कैश नहीं होता है. एम आई राइट? से यस एंड नो. सो मेरे से डिले हो गया जनवरी 2022 का. अब दिसंबर 2022 में मैं जनवरी का रिटर्न भर रहा हूं 3B. So let's say my liability is 1 crore rupees and I got 80 lakh rupees lying in my e-credit ledger. So net payment to be made only 20 lakh rupees. Interest is payable on 1 crore gross tax or 20 lakh, which is my net tax liability. Please tell me. 20 lakh for sure? वोटिंग करना जरूरी है. How many of you say 1 crore पे इंटरेस्ट लगेगा? अच्छा एक रिक्वेस्ट कर दूं इसमें वोटिंग के पहले, बीच वाली पार्टी नहीं, मुझे सबके हाथ ऊपर चाहिए, राइट? How many of you say 1 crore पे इंटरेस्ट लगेगा? 1 crore. And how many of you say 20 लाख पे लगेगा? If notice, ये so many if and buts. इन्हें हाथ तो उठाया 20 लाख पे लगेगा, बट एक लाइन बोल दी कि if no notice is being issued under section 73 and 74, and this is the right answer. इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 20 लाख पे, प्रोवाइडेड नोटिस इशू नहीं होनी चाहिए 73 और 74 की. अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें. जनवरी का रिटर्न भर दिया, पर जनवरी की 2 इनवॉइसेस डालनी थी, जनवरी में नहीं डाली, भूल गए. अच्छा टाइम, मैंने सोचा यहां कौन उतर रहा है. नहीं, अभी मैंने 1 घंटा मांगा है. 15 minutes. 15 minutes, yes. 11:30 I will leave. You are all with me? Yes. Do you really want me? Yes. समझाओ इनको. Rightly said, faceless. सुनता ही नहीं है, पता नहीं कौन है. हो तो बताओ अभी उसको. कई बार इच्छा होता है वहीं से दे दबा के. नहीं, फेसलेस में ऐसा नहीं होता. कई बार लगता तू सामने आ. चलिए, come back. January 2, you have filed your return, but 2 invoices you left out. Let's say 10 lakh rupees. And you are having some credit, let's say 8 lakh rupees.
credit. But these two invoices you did not report in January 3B, now you're reporting in December 3B. So please tell me, interest applicable on 10 lakh or 2 lakh? How many of you say 10 lakh? And how many of you say 2 lakh? It is on gross tax, 10 lakh rupees. So you have to be very, very careful. On this point, I was discussing with the government officer and been telling them, sir, आपने ना 3B भी ऐसा कुछ बनाया है ना कि पार्ट के साथ ये जमा नहीं होता. आप मुझे पार्ट के साथ जमा करने दो ना. तो कम से कम ये जो प्रोविजन आप लेके आते हैं वहां पे नेट पे ही लगेगा ना. एंड नेट पे यू हैव सीन द स्टोरी, पुराना कितना नाटक हुआ है सारा, राइट? अब समझाने के बाद भी एक जगह इन्होंने डिस्क्लेमर डाल दिया कि नहीं नहीं, जनवरी के अगर 2 इनवॉइस है ना और आपने नहीं डाली जनवरी में, तो अब हम आपसे ग्रॉस टैक्स पे लेंगे. आपको लॉजिक समझ में आता है? आता है लॉजिक समझ में? क्या लॉजिक है? ये बड़े भक्त हैं उनके. और जब मैडम से पूछा गया, मैडम रुपया गिर रहा है, बोले रुपया कहां गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है. उनको कौन समझाए क्या गिर रहा है और क्या? ठीक कहा आपने. लेकिन मैं आपको बताऊं, टू माई नॉलेज मिनिस्टर्स आर नॉट लाइक दैट. इट इज ऑल ब्यूरोक्रेसी. जीएसटी में ना जो ये नाटक किया हुआ है ना, कॉपी पेस्ट प्रोविजन, थोड़ा एक्साइज का उठा, थोड़ा सर्विस टैक्स का उठा, थोड़ा वैट का उठा, सबको खुश कर, और फिर जीएसटी काउंसिल में सब कुछ डिसाइड कर और बाहर आके बोल ये रेट क्यों बढ़ा दिया. सर बहुत प्रॉब्लम है. बट दैट इज व्हाट द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ 50 सबसेक्शन 1. नेट पे दीजिए. नहीं सर, वो आईटीसी नहीं अलाउ हो रहा है, नेट पे तो दे दें. ये वो पुराने वाले इशू में पहुंच गए. सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में मुझे आईटीसी, तो सर मैंने तो आपको बता दिया नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज. थोड़ा सा रिट पिटीशन डालना है आपका, बॉम्बे हाई कोर्ट में आ जाऊं, बस वही करना पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई फायदा होने वाला. अगर अपील तक ये दे दे तो फिर आप मुझसे क्यों बात करेंगे? फिर तो आप ही बल्ले बल्ले हैं. यहां मुझसे थोड़ी बात कराएंगे आप. क्रेडिट सब लुफ्त ले रहे हैं आप. क्रेडिट छोटा है, क्रेडिट बड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्रेडिट है, राइट? चलिए टॉपिक बनना, ये टाइम मुझे बार बार दिखाते रहेंगे. फिर wrongly availed credit is not available. You need to reverse, right? Let's say you taken credit in 18-19. आपको नहीं मालूम था, आज मालूम पड़ा, आज today you came to know. आज आप रिवर्स करते हैं, but you have not utilized the same. इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा ना. With retrospective date July 1, 2017. बट अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 24, 18% with retrospective date July 1, 2017. Coming to the refund section 54, टाइम लिमिट है ना 2 साल, बट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था फॉर द पीरियड 15 मार्च 2020 to 28 February 2022. That period need to be excluded for calculation of time limit. Are you recalling that? Keep it to your mind for section 54 for filing refund claim. Let me ask another question, time limit pertaining to. मेरी ट्रांजेक्शन इंटर-स्टेट थी, IGST. मैंने आपको IGST चार्ज किया, बट मैंने रॉन्गली CGST एंड डेली SGST पे कर दिया. आपके पास इनवॉइस क्या है? इंटर-स्टेट. IGST चार्ज किया, बट बिमल ने दिल्ली में CGST और डेली SGST पे कर दिया. Whether department can demand this wrong payment of taxes? Yes or no? कर सकता है. तो यानी वो मुझसे बोलेगा बिमल IGST जमा कर, तो जो मैंने CGST SGST पे कर दिया
वो रिफंड, मान लीजिए 17-18 का ट्रांजेक्शन था, नो टाइम लिमिट? नहीं, टाइम लिमिट है ना, 2 साल है ना? Answer to all of you. Section 77 of CGST Act or read with Section 19 of IGST Act. Till the time amendment was made in September 21, when they have introduced Rule 89 1A or 1B. Prior to that, there was no time limit for filing refund claim. But after that, they have prescribed and they have said by circular also, 2 years from the date you pay that correct tax. Am I clear? Am I clear? But 2 क्वेश्चन है रिलेटेड, इसको भी पूछ के क्लोज करूं. अब IGST पे करूंगा जो 17-18 का था, इंटरेस्ट लगेगा? आवाज तेज नहीं है. अच्छा, आप ये सारे नो पे मत जाइए. They are all BJP party. 17-18 transaction, IGST was supposed to be paid. You are paying now, interest not leviable. Who said payable? Interest not leviable. Well and good. You will claim refund within 2 years from the date you pay correct taxes. Coming to the 73 and 74, last part of my presentation. First of all, let me clarify my position. I'm not from Finance Ministry. Second position, I'm not coming from CBIC also. आपका question मुझे बहुत अच्छा लगा. And I really want to ask this question whenever any government officer comes here. Sir, we are asking these questions. You know that, right? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? Sir, ये pain है. This is all pain. ITC, they are keeping mum. अभी 99C जा रहा है ना, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं बट आपने टाइम से बांध दिया है मेरे को. 99C जा रहा है ना, 99C में कितने इशू आ रहे हैं. यस्टरडे, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल? कैन यू रेज योर हैंड्स? अगर नहीं है तो आप आ सकते हैं, नो चार्जेस. No, you will get lot of good videos. I'm not marketing myself, but I'm telling you, believe me, in GST I'm trying my best. And I always feel like whatever I can do, I must do that. I'm trying my best. I'm thankful that at least you recognize everything. Yesterday, before coming to Mumbai, I recorded 6-minute video. Quickly, my wife was telling me, अभी क्या हड़बड़ी मची है 6 मिनट का वीडियो बनाने की. उसे क्या मालूम कि यार मेरे भी बहुत से दोस्त हैं और इन दोस्तों की वजह से बहुत बार मुझे सुनना पड़ता है. And this 6-minute video was on spillover effect. 2021 credit shown in April 21 to September 21, 21-22, how to be shown in GSTR 9 and 9C. I raised one poll on my Twitter, Facebook and LinkedIn, and I asked this question to all the professionals. I got divergent answer. मैंने बोला फिर 3 दिन के लिए बाहर चला जाऊंगा. Everyone is preparing 9-9C. उनके लिए 6 मिनट का वीडियो बना के डाल दूं. You must go and watch. I'm trying my best, जितना best हो सकता है. So I'm only saying that we must try out. 9-9C पे था, but 73-74 रह जाएगा. Come to 73 and 74. You know time limit for passing order for non-fraud case under section 73. For non-payment, short payment, erroneous refund, ITC availed or utilized. See, मैंने interest में बोला था ना कि wrongly availed credit but not utilized, interest नहीं लगेगा. But 73-74 even wrongly availed is in a rider. Believe me, वहाँ पे ये नहीं बोलता कि wrongly availed but not utilized. अगर आपने wrongly भी availed किया, they can go with the provision of 73 and 74. But to my mind, they can't. They can't. So 73, the time limit prescribed for passing order, 3 years from due date of furnishing annual return. And it is 5 years in case of section 70 fraud cases.
So whenever we demand extension of due date, it's wrong. It is extending time period in their hand. Am I right? Rather, we should demand waiver of penalty and late fees. Am I clear? So what is the time period for issuing so-cause notice? It is the time period for order. At least 3 months prior for 73, at least 6 months prior for section 74. Am I clear? Now, in this 73 and 74, one particular case. Have you heard of, search, seizure? ये पक्का शिवसेना का बंदा है. On a lighter note, बच्चा, look at me. Give a smile. Don't take me otherwise. On a lighter note. Last one, and then I will close up. Last one. Allowed? Yes. Allowed? मुझे तो अच्छा क्या लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है. इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है. Search, seizure and arrest pan India, right? And ये कुछ भी इनके दिमाग में कुछ भी आना चाहिए. पूरा पैन इंडिया में एक ही तरह का चीज है. हाँ, 23 में हो सकता है कम हो जाएगा, इलेक्शन है ना 24 में. See, circular India issue किया. There's the one case, fake invoice and fake credit. You know that, right? Fake invoice and मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया fake invoice है क्या और fake credit है क्या. Maximum 5 minutes. No, 5 minutes. Taking my time, then it should not be ending up with other speaker. Otherwise, वो बोलेगा, श्वेता मैम भी ऐसे ही बोलेंगे. रात तक बैठेंगे ना? नहीं बैठने का. मैं चला जाऊंगा. ये तो चालाक लोग हैं. देखिए, पढ़ाई का मजा तभी है जब दोनों अटैच हो. Even I'm recalling my, CA days study when we used to study in a group, cracking a joke here and there, then again putting attention for 1 hour, then again cracking a joke. तू चाय बना, मैं ये. वो दिन बहुत अच्छे थे. आज के दिन में आके तो ऐसा लगता है ना थकीले हो गए. रियल में बिलीव मी, जब कुछ नहीं था तो बहुत कुछ था. आज सब कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है. बहुत कुछ नहीं है. So when coming to, deliberation to my own fraternity, मैं कभी भी ना टॉपिक थ्योरी लेके समझ के नहीं आना चाहता. यार यहाँ आ रहे हैं, 1.5 घंटा 1 घंटा enjoy करेंगे. And we must enjoy that part. You will get more and more when you really get into your own mod. अपने तरीके से जब आप इंटर करते हैं ना, so you learn more. मैं PPT दिखाते जाऊंगा, नहीं समझ में आएगा. Last, fake invoice, fake credit. Otherwise, we are all genuine, honest taxpayer. What department is alleging, Bimal, there are 4 offences for arrest. Chartered accountant are also in trap. Under section 69, red bit 132, subsection 1. Whoever committed or who causes to commit 4 specified offences. Supply of goods or services without invoice, cash sale. Issuance of invoice without supply of goods or services, fake invoice. Third, you are taking credit on such fake invoice. And last, GST collected but fails to pay beyond a period of 3 months. Amount is more than 5 crore. Then arrest provision, non-bailable offense. We have pleaded and we have submitted pre-budget memorandum to Revenue Secretary. We have said this threshold should be increased from 5 crore to 20 crore. They're talking about decriminalization. I said it should be invoked only when it is being proven fraud intent. Just on the basis of interpretation, classification, you can't say. And you prove. एक client मेरे पास आया, बोला सर मेरे पास इनवॉइस की कॉपी है, मैंने गुड्स रिसीव किए हैं, मेरे पास ई-बे बिल है, मेरे बैंक से पेमेंट गया हुआ है, सब कुछ है. डिपार्टमेंट बोलता है ये फेक इनवॉइस है. एंड बोलता है आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. 60 crore रुपीज क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल. समन इज बीइंग इशूड. समन में रिपीटेडली दे वांट टू हैव आंसर ऑफ देयर चॉइस. वो आपकी बात नहीं सुनना चाहते, मेरी बात नहीं सुनना चाहते. दे आर ओनली विलिंग कि भाई ये क्या है, ये क्या है, उनके हिसाब से प्रूव होना चाहिए. एंड दे हैव ब्लॉक्ड माय ई क्रेडिट लेजर आल्सो.
I filed a writ in Rajasthan High Court. I said, Milord, Rule 86A can be invoked only when they prove it is fraudulent credit. Just on the basis that this is a fake invoice, they can't. They have to prove how it is fraudulent. And my e-credit ledger got vacated. But for the reference which I took this example for discussion today was fake invoice and fake credit circular. क्या बोलते हैं मालूम है लोग? अगर बिमल ने आपको इनवॉइस रेज किया और उस पर अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, बट आपको तो रिसीव हुआ है, ईबे बिल है, आपने ट्रक का फोटो भी लिया है, बट दे आर सेइंग नो इट्स अ फेक इनवॉइस. अरे आप भी तो प्रूव करो कैसे फेक है. दैट सर्कुलर इज गोइंग बियॉन्ड इमेजिनेशन. दे आर सेइंग अगर बिमल ने कोई इनवॉइस रेज किया जो फेक इनवॉइस है तो बिमल के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपका क्रेडिट रिवर्सल होगा बिकॉज यू हैव नॉट रिसीव द गुड्स, बट यू प्रूव इट ना. एंड दैट सर्कुलर फर्दर सेज बिमल के ऊपर हम पेनाल्टी लगा देंगे, पेनाल्टी 122 की. बिमल के ऊपर क्यों नहीं मांग रहे मालूम है? कि बिमल ने गुड्स सप्लाई किए ही नहीं है, तो सप्लाई है ही नहीं है, तो बिमल के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है. तो मैंने पूछा 122 में आप पेनाल्टी किस पे लगाने की बात कर रहे हैं? वहां तो बोलता 20,000 और टैक्स अमाउंट इवेडेड. सो 60 करोड़ रुपया टैक्स इवेडेड वर्सेस 20,000 रुपीज, कितना लगाएंगे? डिपार्टमेंट बोलेगा 60 करोड़. मैं बोला सर सप्लाई तो है ही नहीं है, जब सप्लाई नहीं है तो टैक्स इवेजन कैसा? सो मैक्सिमम पेनाल्टी इज नहीं बिमल ऐसे कैसे होगा? सर ऐसे नहीं होगा तो फिर ये तो सप्लाई है. Am I right ना? यही लॉ है. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, सप्लायर फेल्स टू पे, राइट, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. There is one provision 41 subsection 2 which is recently introduced from 1st October 2022. बड़े ध्यान से सुनिए, that is last component and close. 41 subsection 2, it is saying if supplier has not paid the amount, then buyer need to reverse credit along with interest. And whenever supplier pays the amount, you can avail the credit. 41 subsection 2 prospective clause made effective from 1st October 2022. My first question. सर वो सेक्शन 16 2C में तो था ही ना, नहीं मिलेगा क्रेडिट, तो ये लाने की क्या जरूरत थी? सेकंड, ये लेके इसलिए आए हैं कि कोर्ट बार बार ये कहता है कि आप बायर से रिवर्सल क्यों मांगते हो, सप्लायर से मांगो. अब वो कोर्ट में जाके कहेंगे सर 41(2) वी कैन डिमांड रिवर्सल फ्रॉम द बायर. अब मैं जाके कोर्ट में कहूंगा सर मिलॉट दिस इज प्रोस्पेक्टिव क्लॉज फ्रॉम 1st October 2022. It cannot be applied for the past period. Prospectively applicable only on or after 1st October 2022. यानी अगर रिवर्सल इनको मांगना है तो उसी ट्रांजैक्शन पे मांगना है जो 1st October 2022 के बाद हुई है. आप लेके आए ना प्रोविजन. सो द लॉ इंटरप्रिटेशन इज, जैसे एक बार ये रीड करते हैं हम भी उसको रीड कर सकते हैं. So time barring, there are lot many things which we can discuss at length. But nevertheless, I'm thanking each one of you. लेकिन एक मारवाड़ी वाला आपने बोला था, मारवाड़ी बोल सकता हूँ. एक मारवाड़ी वाला आपके सामने कुछ बोलना है, बोल के फिर दिन खत्म करूंगा. बोलूं? एक राजस्थानी बंदे की शादी होती है सर. कुछ ने सुन लिया होगा, कुछ ने नहीं सुना, तो एंजॉय कीजिए. राजस्थानी मारवाड़ी में ही बोलूंगा सर. कुछ हिंदी में बता के मारवाड़ी में कन्वर्ट करूंगा. हाँ, एक राजस्थानी बंदे की शादी होती है, वो शादी करके अपनी बिनड़ी को बस स्टॉप पे लेके आता है. आपको तो मालूम है राजस्थानी बिनड़ी जिसकी शादी होती है उसका घूंघट लंबा होता है, और जब घूंघट लंबा होता है तो देखने की इच्छा सब मालूम है. जीएसटी नहीं मालूम? हाँ, घूंघट लंबा तो देखने की इच्छा जो सब मालूम है. देखे ना, हिंदी बोलूं, मारवाड़ी बोलूं, मराठी बोलूं, सब मालूम, बात एक है. तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि जिसकी शादी हुई है वो टैक्स डिपार्टमेंट, और जो बिनुड़ी है वो जीएसटी लॉ,
और बस स्टॉप पे जिनकी देखने की इच्छा ज्यादा हो रही है वो है हम सब, टैक्स पेयर, टैक्स प्रोफेशनल। हम तो देखेंगे कि क्या लॉ एप्लीकेबल है, देख ले कल गलती नहीं हो जाए, इसलिए बार बार हम चेक कर ले रहे हैं, नोटिफिकेशन है ना, रूल है ना, इसलिए देख रहे हैं, सब आगे पीछे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो लॉ है ना बिनड़ी, वो उस घूंघट से में भी देख रही है कि ये सब हमको देख रहे हैं, राइट, और खुश हो रही है, देखते रहो मैंने वहां चेंज कर दिया है, देखते रहो मैंने यहां चेंज कर दिया है, मैं राइट। बट बिनड़ी जीएसटी लॉ नाउ सेइंग टू द टैक्स डिपार्टमेंट, हस्बैंड, ये जी सुनते हो, ये सब मने देख रहे हैं, मने तो शर्म लाग रही है, तुझे तो लगेगी, तो हमसे पूछ हमारा क्या हाल है, राइट। सो बिनड़ी हु इज अ जीएसटी लॉ सेइंग टू द हस्बैंड टैक्स डिपार्टमेंट, ये जी सुनते हो, ये सब मने देख रहे हैं, मने तो शर्म लाग रही है। नाउ दिस टैक्स डिपार्टमेंट सो वोकल, कितना नॉलेज है वैट डिपार्टमेंट में, जाइए आपको जीएसटी का, आप जाइए। सो दिस SGST फेलो ऑफ महाराष्ट्र विद अ लाइटर नोट, इवन सम ऑफ द ऑफिसर ऑफ CGST, ये तो पढ़ते ही तब है जब इनको कुछ समझ गए ना आप, इनकी पढ़ाई तब चालू होती है जब इनके पास कुछ आना है, और जब इनने जो सोच लिया वो लॉ में भी नहीं है, बस आप उनका काम कर दीजिए, सब ठीक है, all good. So now this husband saying to Binri, so husband tax department telling to the GST law, Binri, ए बाबड़ी तू घबरावे क्यों है, ए बाबड़ी तू घबरावे क्यों है, अपना घूंघट उठा दे, ये देख के सब भाग जावेंगे। इसीलिए जीएसटी में प्रॉब्लम है कि जैसे ही जीएसटी लॉ खोल के पढ़ना चालू करते हैं वैसे ही सोना आ जाता है। But nevertheless, thanks for giving me this opportunity and listening to me. Thank you very much.